सो जो अबव इक्वेशन हमने लिखी थी हेल्मट्स इक्वेशन, उस हेल्मट इक्वेशन के अंदर जो राइट हैंड साइड पर आप देख रहे थे, देयर इज अ पैरामीटर विच इज, देयर इज अ फंक्शन साई विच इज, जिसका जो सोल्यूशन हमें निकालना है. So since the source term is basically on the right hand side, as u into psi, where u is some modified potential modified by the factor 2m upon h bar square. So we would have some formal solution, and that formal solution is basically some integral equation. Uh, we would see that why it is called integral equation, as in the integrand there is this function जिसका हमें solution निकालना है, so that's why we call it as an integral equation. So uh, then since the source term, since the source term or or right hand right hand side is u into psi, that is, this is the source term. The formal solution क्या हो जाएगा? The formal solution to Helmholtz equation वो किसके बराबर हो जाएगा? That would be psi of r, which is equals to -1/4 pi integral d3. We are talking about free space d3 r prime in the space of r prime coordinate times the Green's function r comma r prime times u of r prime and psi of r prime. So and this is basically also a particular solution. Why we can say this, or that it is a particular solution, because we can add any solution to this homogeneous equation, homogeneous differential equation जिसको आपने Helmholtz equation का. And so we can, if we can add any solution to this homogeneous differential equation, we can add a plane wave solution, which is basically which in fact corresponds to the incoming plane wave, and that incoming plane wave would be n times e to the power iota k dot r. Yeah. और उस सूरत में जनरल सोल्यूशन हमारे पास कुछ आ जाएगा. So what is important also is that you see in this equation, and we have psi of r, which is also on the as which is also coming as the integrand of this integral, and so that's why we call it as in fact the integral equation. Uh, so psi k itself appears as the integrand, appears as the integrand, and that's why we call it as is an integral equation. Yeah. Okay, so this is basically some integral equation, and we can add any solution, to the homogeneous differential equation, जो जिसको हमने Helmholtz equation ऊपर कहा था, to the homogeneous differential equation. So such as we can add in fact a plane wave, such as a plane wave that is n some constant representing the number of incoming particles e to the power iota k dot r. So we can add to this, and we do not disturb the integral equation, and therefore the general solution, the then the general solution
वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? दैट जनरल सोल्यूशन वुड बी psi k of r, which is equals to n times e to the power iota k dot r minus 1 upon 4 pi integral d3 prime g of Green's function r comma r prime u of r prime psi k of r prime. Yeah? So this is in fact the general solution. And once we know this Green's song, अगर हमें यहाँ से इस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हमें ये ग्रीन्स फंक्शन पता चल जाए, then the equation can be solved. Then the equation can be solved for this basically psi k of us by using some iterative procedure. Yeah. So, but for this case, we have to assume that the effect of u, that is this modified potential, that is modified by 2m upon h bar square factor, is small in some sense. Yeah. अच्छा, is small in some sense. यहाँ से बुनियादी तौर पर फिर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स स्टार्ट होती हैं. वन विच इज नोन एज द बॉर्न अप्रोक्सीमेशन टेक्निक एंड द अदर वन इज नोन एज द partial wave analysis. That is, if u is small compared to compared to the energy of the incoming particle, then the approach for solving a scattering problem would be known as the Born approximation. And in case u is larger, then the incoming beam, energy of the incoming beam of particles, and that would be known as the partial wave analysis. But हम उस चीज को डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. बट जो कहने का मकसद है वो ये कि अगर इस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर हमें g ऑफ ग्रीन्स फंक्शन पता चल जाए, तो then we can solve this equation for psi k of r by just assuming that the effect of u of u, that is the modified potential, is small in some manner. Yeah. So once we know the Green's function, g, uh, the equation or the integral equation can be solved using an iterative procedure. Because why iterative procedure? Because you could see that this is an integral equation, and in the integrand we have psi k as well, which जिसका solution हमें निकाल जो हमें solution निकालना है. So in some iterative procedures क्या होते हैं? These are some numerical procedures जिसमें you iterate in some manner such that the solution we obtain is continuously or successively is checked for some value until we have the consistency of the solution. So that is some iterative procedure. But in this case, in iterative procedure, we have to assume that the effect of u is small in some sense, assuming that the effect of u is small in some sense. That is what is basically assumed. Okay. Okay, now let's determine this g, because हमने कहा ना अगर हमें g ग्रीन्स फंक्शन पता चल जाए तो हम फिर बुनियादी तौर पर इटरेटिव प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज टू फाइंड psi k of r. Yeah. So now first of all we determination of Green's function, determination of g Green's function, and for what? For Helmholtz equation. Yeah, so we would like to determine Green's function for the Helmholtz equation. अच्छा, we know यहाँ पर हमें मालूम है कि b g of, so what is
This is what we want to know. Since g of r comma r prime वो किसके बराबर है? This is g of r minus r prime. Uh, and why is that? This is due to the Kronecker delta function due to delta r minus r prime uh, in in the equation defining g. Yeah. So since we know this, so then we can introduce Fourier transform. Fourier transform is another technique uh, for solving some integral equation. Then uh, how to introduce Fourier transform? So we need to have some Fourier transform function. So introducing Fourier transform from G of K prime. Yeah. And कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दिस कैपिटल जी ग्रीन्स फंक्शन के लिए? सो दिस कैपिटल जी ऑफ आर वुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर? द इंटीग्रल d3 k प्राइम e to the power iota k dot r, yeah, uh, k prime dot r, because we have the integral over this space k prime times some function which is the Green's function, which is basically some Fourier transform function. Yeah. और इधर जो इनवर्स अगर हम इसका लेना चाहें, वी कैन ऑल्सो हैव द इनवर्स ऑफ दिस. सो जी के prime, which would be the inverse of this Fourier transform, that would be 2 pi the whole cube integral d3r. This is the inverse of the Fourier transform minus iota k dot r. Yeah. And we have to talk about prime here. Prime iota minus iota k prime dot r times g of r. This is basically the inverse Fourier transform. Yeah, so this is inverse Fourier transform. And so we can apply the Helmholtz operator del square plus k square onto this onto this in fact Fourier transformation. So applying Helmholtz operator. And what is this Helmholtz operator? Helmholtz operator is del square plus k square, yeah, on to the onto the Fourier transform. तो क्या हो जाएगा? सो अगर हम अप्लाई करेंगे Fourier transform and also using some and also using an equality, और वो क्या है? For this delta function delta of r, which is equals to 1 upon 2 pi whole cube integral d3 k prime e to the power iota k prime dot r. या सो ये इस्तेमाल करें अगर हम, तो हमारे पास ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएं ग्रीन्स फंक्शन पर फॉरियर ट्रांसफॉर्म पर. सो वी वुड हैव द ऑपरेटर हेल्महोल्ट्ज ऑपरेटर. सो दिस इज डेल स्क्वायर प्लेस plus k square operating on g of r ऊपर. Yeah. And this would give you which is equals to किसके बराबर है? This is equals to minus 4 pi, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है किसकी? ग्रीन्स फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. एंड दिस वुड बेसिकली रिजल्ट इन, so this would result in
minus k square. So this operator would be operating on g of r above जो Fourier transform है, would give you k square prime plus k square g of k prime, which is equals to minus 4 पाई। और इस क्रॉनिका डेल्टा फंक्शन की जगह जो है हम ये इस्तेमाल कर लेंगे जो हमने अभी ऊपर इक्वालिटी के बारे में कहा। सो दिस इज बेसिकली दिस इक्वालिटी। सो द राइट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल्स टू डॉट 1/2 पाई का होल क्यूब। तो सॉल्व कीजिएगा इसको। ये सिंपल सा प्रोसीजर है डेरिवेटिव्स लेने का और देन इक्वालिटी को सब्स्टिट्यूट करने का। एंड सो हमारे पास जी ऑफ के प्राइम जो है दैट कम्स आउट टू बी 1/2 पाई स्क्वायर इंटू 1/के प्राइम स्क्वायर माइनस नो। सो दिस इज के प्राइम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। सो ये माइनस साइन जो ये वाला है ये डिनोमिनेटर के अंदर आपने एब्जॉर्ब कर लिया। ये क्या चीज है? इज द ग्रीन्स फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। इज द ग्रीन्स फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। सो दिस इज बेसिकली ना। अब हम इसको अगेन मोमेंटम स्पेस में आए, हम इसको वापस दोबारा रियल स्पेस में कन्वर्ट कर दें। कैसे? अगर हम इस वैल्यू को जी ऑफ के प्राइम को इस इक्वेशन के अंदर दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दें। कहाँ पर? इस इक्वेशन के अंदर। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दें जी ऑफ के प्राइम को। या सो कन्वर्टिंग इट बैक, कन्वर्टिंग इट बैक टू रियल स्पेस। या सो क्या हो जाएगा? जी ऑफ आर जो है, जी ऑफ आर वुड बी इक्वल्स टू किसके बराबर? इंटीग्रल d3 k प्राइम e⁻ iota k dot r with the prime times 1/2 पाई स्क्वायर। सिर्फ उस पर है ये। So this is 1/2 पाई स्क्वायर। So this is 2 पाई स्क्वायर, yeah, times 1/1 के प्राइम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। या और अगर हम k dot r को we can change it to some cosine that, so k prime dot r is equals to k prime uh, r into cos of theta। और यहाँ पर थीटा जो है, थीटा इज द एंगल ऑफ के measured with respect to r। so you could think about some specific direction of k, and that is basically related to the radius r। So this is in fact angle of k vector measured with respect to r। Yeah? So this is that k angle। So जो ये एंगुलर पार्ट्स हैं इस इंटीग्रल के अंदर, सो यू कुड थिंक अबाउट d3 k प्राइम जो है, that could be written as minus infinity to plus infinity। That would be d
k prime part, and then there would be in fact some -1 to +1 d theta, and there is basically 0 to 2 pi d phi. Yeah, so in fact जो एंगुलर इंटीग्रल्स हैं हम सिर्फ उनको सॉल्व कर लेते हैं, एंड लेट्स नॉट सॉल्व द के इंटीग्रल. सो द एंगुलर इंटीग्रल्स क्या हो जाएंगे? द एंगुलर इंटीग्रल्स वो क्या होंगे? दैट इज 0 to 2 pi फॉर d phi, and integral -1 to +1 d cos of theta e to the power iota k prime r cos of theta. इसको सॉल्व कर लें. सो वी वुड हैव 2 पाई. इसका इंटीग्रल करेंगे तो 0 to 2 पाई का डी फाई पर करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा. और जो आपका ई टू द पावर आयोटा के प्राइम आर कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो दैट वुड कम आउट टू ई टू द पावर आयोटा के आर के प्राइम आर माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा के प्राइम आर अपॉन आयोटा के प्राइम आर. या और बेसिकली जो सेकंड टर्म है ये सेम है एज द फर्स्ट टर्म. अगर सेकंड टर्म इज द सेम एज द फर्स्ट टर्म, सो वी कैन चेंज के प्राइम टू माइनस के प्राइम, और के प्राइम को माइनस के प्राइम करने पर सो वी वुड हैव टू चेंज द इंटीग्रल. सो या सो एक चीज हमने यहाँ, ये इंटीग्रल हमारा क्या है? 0. सो वी गो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. एंड अगर हम इस अब ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया. सो या चलें पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लें. सो हमारे पास जो सोल्यूशन आया होगा वो कुछ इस तरह से आया होगा, किसका? डी 0 टू इन्फिनिटी d3k प्राइम, और दैट वुड बी 2 पाई ई टू द पावर आयोटा के आर प्राइम के साथ माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा के प्राइम आर अपॉन आयोटा के प्राइम आर. या नाउ इसके अंदर जो ये सेकंड टर्म है न्यूमरेटर के अंदर, ये जो सेकंड टर्म है दिस टर्म, इसके अंदर हम के को, these two terms are basically, first of all हमें ये सोचना चाहिए these two terms are same. Why these two terms are same? Because what you are thinking here, let's talk about integration कैसे होगी along the space. So you would be integrating along, so if this is 0, so you would be integrating from minus infinity values of k to 0, and from 0 k prime values to plus infinity. Yeah. So it means that for one of the part, you would be using this e to the power minus iota k prime r, and for the other positive part, you would be using e to the power plus iota k prime r. Yeah. So it means that these two terms जो हैं numerator के अंदर, they are same. And the only difference is basically for this 0 to infinity with e to the power plus iota k prime r, or 0 to infinity for k then equals to that is on the negative side, that e to the power minus iota k prime r. So the जो numerator है उसमें दोनों terms कैसी हैं? Same. In the numerator, the two terms are same. Terms are same. सो हम क्या कर सकते हैं? सो वी कैन चेंज के प्राइम टू माइनस के प्राइम, है ना. और के प्राइम को माइनस के प्राइम पर करने के साथ साथ हम क्या करेंगे? वी वुड बेसिकली, सो एक चीज का और ख्याल रखें. सो ये चीज जो हो जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर के प्राइम भी आ रहा होगा. ठीक है. सो अगर हम ऐसे करेंगे तो देन वी वुड चेंज
This could be done at the cost of changing the limits. That is, rather than using the limit 0 to infinity, we would be using then a minus infinity to plus infinity integration. So then the integrand would be just one component, which is e to the power iota k prime r, and we would be just then, in fact, sort of integrating from minus infinity to plus infinity. And the two factor, जो 2 pi के साथ 2 factor है, that would be cancelled. So we have two integrals from 0 to 2 pi, 0 to infinity, that is one for negative coordinate and one from the positive line. So then 2 would cancel if we change the limit from minus infinity to plus infinity. Yeah. And so the integral would then become g of r would then become equals to 1 upon iota pi r integral minus infinity to plus infinity dk prime k prime e to the power iota k prime r over k prime square minus k square. दिस इज द इंटीग्रल जो हमें हमें यहाँ पर मिला. अब ये इंटीग्रल इंटरेस्टिंग इंटीग्रल है. And you are integrating from minus infinity to plus infinity. So you would be using all values of k, that is going from minus infinity to plus infinity. So there would come some value of k where k prime would be equals to k. And for such a case, the denominator would be 0 and the integral would be a diverging integral. So this, there would be some value for k prime is equals to k, and there would be what we call it as singularity. And so for such values in mathematics, for solving complex integral or complex analysis, we call such points as poles. That is where k prime is equals to k are known as poles. Yeah. So and at these poles, basically the integral would be 0. So obviously the integrand has since the integrand has poles at k plus k prime at k is equals to plus or minus on the real axis. So, in fact, we would not have we would not have a real integral or a converging integral until we could avoid these poles. That is, at k prime is equals to plus k and at k prime is equals to minus k. Yeah. So we need to avoid these poles in order to have to have the solution of this integral as converging rather than diverging. Yeah. So let's sort of avoid these poles. How do we avoid these poles? So we have to shift a little bit in the imaginary axis. Remember, we have this integral which is the imaginary integral. You see, we have iota here, so this is some imaginary integral. And in complex analysis, for such imaginary integral where you have a denominator where there are poles, you need to avoid these poles in order for the integral to be solved definitively, not as a diverging integral which has no solution. So let's sort of write this concept. So obviously the integrand has poles. कहाँ पर हैं poles? Has poles at k prime is equals to plus minus k on the real axis. Horizontal axis is the real axis. Vertical axis is the imaginary axis for complex integration. On the real axis. एक बात ठीक है ना? So is not really defined. So this so one could say that such an integral cannot be defined until we remove the poles. So so is not defined
at poles. So the integral is not defined at poles until uh, we specify how to avoid those poles. Yeah. और या तो या तो उनको अवॉइड कर लें, either by moving them off the real axis or shifting the poles of integration off the real axis. So दो तरीके से कर सकते हैं, either by moving them off the real axis यानी उन poles को real axis से हटा दीजिए, या शिफ्ट कर दें उस पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को सच दैट द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट ऑन द रियल एक्सिस, दैट इज इट इज अबव और बिलो द रियल एक्सिस. सो दो तरह से इनफेक्ट किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है पोल्स को. हाउ ईदर वी मूव दोज पोल्स ऑफ द रियल एक्सिस, सो ईदर by uh, removing them off द रियल एक्सिस. यानी किन को बात कर रहे हैं आप पोल्स की बात कर रहे हैं. और दूसरा का क्या हो सकता है, शिफ्टिंग द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, और शिफ्टिंग द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द रियल एक्सिस, ऑफ द रियल एक्सिस. ठीक है. सो इन ईच केस, दोनों तरह से बुनियादी तौर पर हम अवॉइड कर लेंगे जो आपका डाइवर्जेंसी को. ठीक है ना. सो फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स जस्ट ट्राई लेटिंग के हैव अ स्मॉल इमेजिनरी पार्ट. यानी दूसरे लफ्जों में, बजाय इंटीग्रेशन पाथ को तब्दील करने के हम क्या करते हैं, लेट्स से वी अज्यूम दैट के जो आपका इनफैक्ट वेव वेक्टर है, इस इसमें सम स्मॉल इमेजिनरी पार्ट ऐड करते हैं. दैट स्मॉल इमेजिनरी पार्ट ऐड करने का मतलब है कि आप पोल्स को रियल एक्सिस से मूव कर रहे हैं अप और बिलो, या अप करेंगे तो प्लस के साथ, बिलो करना है तो दैट वुड बी सब्ट्रैक्टेड. दैट इमेजिनरी स्मॉल इमेजिनरी पार्ट जो है, जो उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस वुड मीन दैट यू आर moving the poles of the real axis. So for simplicity हम क्या कर सकते हैं, for simplicity uh, the let's just uh, try letting k have a uh, small imaginary part, and the consequence of this would be this will sort of move the poles, move the poles of the real axis. है ना. इसका इफेक्ट ये होगा कि दिस वुड रिमूव मूव द पोल्स. सो लेट अस डिफाइन let k is equals to k plus iota eta. Yeah. And what is iota eta? Eta is that small imaginary part जिसकी मदद से हम इसको नीचे या ऊपर कर रहे हैं. सो अगर हम इसको पिक्टोरियली देखना चाहें तो दिस इज, so this is some imaginary axis and this is the real axis,
Yeah. And we want to integrate, so this would be an integration in this manner. So this would be integration over the contour. So we are integrating. In complex analysis, integration is the integration over the contour. So we move the pole up or we move the pole down. So this is k plus iota eta, or this is k minus iota eta. So we are moving the poles up or down such that basically we are avoiding the direct impact of the poles, and the direct impact of the pole would be a singularity. Yeah. और आखिर में फिर हम इस ईटा को वुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. सो हमें अब जब हम ये करते हैं तो हमें बुनियादी तौर पर रेजिड्यू निकालना होता है. हाउ मच, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द पोल, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ integration which we need to incorporate in order for our calculations, in order for our calculated value to be consistent. हमें रेजिड्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोल्स का रेजिड्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पोल्स हैं वो कहाँ पर हैं? पोल्स आर एट के प्राइम विच इज इक्वल टू प्लस माइनस के प्लस आयोटा ईटा. दिस इज द पोजीशन ऑफ द पोल्स. सो जो फैक्टर है which we would like to sort of avoid, this e to the power iota k prime r जो है, this would change into e to the power iota k prime, rather bracket में plus iota eta, and this is equals to this is almost equals to, इधर r भी है, this is almost equals to e to the power minus eta r. Yeah. और दिस इज द फैक्टर जो बेसिकली एडिशनल फैक्टर है जिसके लिए हम इनफैक्ट रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे. सो द कॉन्टोर मस्ट क्लोज इन द अपर. सो अगर के आप प्लस आयोटा ईटा ले रहे हैं, जो कॉन्टोर ऑफ इंटीग्रेशन है इट विल क्लोज इन द अपर हाफ ऑफ द रियल एक्सिस प्लेन. और अगर k इज इक्वल टू माइनस आयोटा ईटा लेंगे तो देन द कॉन्टोर वुड क्लोज इन द लोअर हाफ ऑफ द planes. So, so the contour, so the contour of integration, जिस पर contour of कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में उस पाथ को जिस पाथ पर इंटीग्रेशन करते हैं उसको contour कहते हैं. मस्ट क्लोज, मस्ट क्लोज इन अपर हाफ, upper half of complex plane. Okay. Encircling only the poles, only the poles at k prime is equals to k plus iota eta. ठीक है ना? सो सिर्फ ऊपर वाले, और ईटा इज टेंडिंग टू जीरो. सो उस सूरत में इन द एंड वी वुड टेक ईटा एज टेंडिंग टू जीरो. देयरफॉर जी ऑफ आर जो होगा, g of r would be equals to, using the residue theorem, 2 pi iota times residue of k plus iota eta. और ये किसके बराबर होगा? दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा तो आ ही रहा है,